In the previous video, we have completed the structure of thyroid glands and hormones of the thyroid gland. कौन से? That is first one is the thyroxine and second one is the thyrocalcitonin. Now in this video, we are going to learn the function, the role of thyroid hormones in our body. क्या क्या function perform करते हैं. तो सबसे पहले कि हार्मोन्स में से एक बार लिखता हूँ कि नंबर वन हार्मोन्स कौन से दैट इज थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन सो वी डिस्कस फर्स्ट दैट इज द थायरोक्सिन देखो इन आवर बॉडी थायरोक्सिन अगर थायराइड ग्लैंड बनाता है तो उसके लिए उसको आयोडीन की जरूरत है मतलब वेरी क्लियर कि आयोडीन इज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन फर्स्ट कौन सा आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन वेरी क्लियर थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत है एंड आयोडीन हम कैसे लेते हैं तो वी आर टेकिंग द आयोडीन थ्रू द डाइट सो आयोडीन कहां से लेते हैं आयोडीन वी आर टेकिंग फ्रॉम द डाइट अब देखो देयर इज वन कंडीशन इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट deficiency deficiency of iodine in a diet होगी तो जो हार्मोन है थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा इट प्रोड्यूस और सिंथेसाइज इन स्मॉल अमाउंट एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म उसे क्या कहेंगे थायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब दैट इज लेस सिंथेसिस और लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हम उसे कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब ग्वाइटर उसे ही दूसरा नाम क्या है दैट इज ग्वाइटर हम उसे कहते हैं सिंपल ग्वाइटर राइट सिंपल ग्वाइटर अब सिंपल ग्वाइटर क्यों होता है देयर इज अ लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड लेस सिक्रेशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अ diet why because iodine is essential for the synthesis of thyroxine thyroxine synthesis करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है सो दैट इज ग्वाइटर अब ग्वाइटर अगर होता है तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टराइज है ग्वाइटर की सो ग्वाइटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्योंकि हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन on ventral side of the windpipe. So goiter is characterized by क्या characteristics है? It is characterized by enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, and that is hypothyroidism. उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म अब हमने सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म कंसीडर किया हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन क्यों ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट हमारे डाइट में आयोडीन की कमतरता है उससे होगा सिंपल ग्वाइटर जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म अब सिंपल ग्वाइटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अब नेक्स्ट कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है हाइपोथायरॉयडिज्म in two cases
we'll learn what happens if there is a hypothyroidism in two cases. Two cases में first during pregnancy, hypothyroidism during pregnancy क्या होगा? Second, hypothyroidism in adulthood में क्या होगा? Right? So we'll discuss the two things. अगर hypothyroidism during pregnancy है तो क्या होगा and hypothyroidism in adulthood. So hypothyroidism in pregnancy first क्या होगा? Hypothyroidism during pregnancy क्या होगा? There is defective development and maturation of the growing baby. First, defective development and maturation. Defective development and maturation of growing baby. जो बेबी मदर के बॉडी में ग्रो हो रहा है उसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ठीक से नहीं होगा, दैट इज डिफेक्ट। उससे क्या होगा? लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। उसका ग्रोथ कैसे होगा? स्टंटेड ग्रोथ, एंड दैट स्टंटेड ग्रोथ इज नोन एज क्रेटेनिज्म। जो बेबी प्रोड्यूस होगा दैट इज विद स्टंटेड ग्रोथ, लीडिंग बॉडी पोस्चर, स्टंटेड ग्रोथ, एंड उसे कहते हैं क्रेटेनिज्म। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, एंड उससे क्या होगा? तो स्टंटेड ग्रोथ, एंड स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या? तो क्रेटेनिज्म, राइट? अब क्रेटेनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और hypothyroidism during pregnancy is characterized by number 1 mental retardation। जो बेबी होगा कैसा होगा? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड। फर्स्ट थिंग, उसका जो आईक्यू होगा, इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, दैट इज लो, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चंस कैसा होगा? लो होगा। उसका स्किन अगर हम देखेंगे तो उसका स्किन एबनॉर्मल स्किन कैसा होगा? एबनॉर्मल स्किन, स्किन भी कैसा होगा? एबनॉर्मल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट, इट शो डिफ म्यूटिज्म। डिफ म्यूटिज्म मतलब कैनॉट हियर, हियरिंग लॉस, सुन नहीं सकेगा, एंड कैनॉट स्पीक, बोल नहीं पाएगा। डिफ म्यूटिशन मतलब हियरिंग लॉस, एंड सेकंड वन इज कांट स्पीक, बोल भी नहीं पाएगा। और जब प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी के अंदर जब फीटस बेबी ग्रोथ होगा वो क्रेटेनिज्म शो करेगा, इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ मैच्योरेशन, क्रेटेनिज्म। सो क्रेटेनिज्म होगा मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्रेटेनिज्म की? तो क्रेटेनिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय mental retardation, mentally retarded, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf mutism, hearing loss and can't speak. That is the first condition. अब second condition जो है that is hypothyroidism in adult women। एडल्ट वुमन में हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो क्या होगा? इन एडल्ट वुमन, so due to hypothyroidism in adult woman, the menstrual cycle become irregular। वुमन की जो menstrual cycle होती है through which the eggs is produced वो irregular होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमन क्या होगा? तो menstrual cycle become कैसी होगी? irregular, कैसी होगी? irregular। So this is what the hypothyroidism।
एक बार फिर से रिव्यू करता हूं कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन. Why there is a less secretion of thyroxine? Due to the deficiency of iodine. Very clear. Then what happened in hypothyroidism? Enlargement of thyroid gland. हमने दो कंडीशंस लर्न किए. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमन. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा? जो फीटस है मदर के बॉडी के अंदर जो डेवलप हो रहा है बेबी, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, उसका स्टंटेड ग्रोथ होगा एंड दैट इज क्रेटिनिन. एंड दीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेटिनिन. एडल्ट वुमन में क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट बिकम इरेगुलर ड्यू टू hypothyroidism, due to less secretion of thyroxine. So this is all about the hypothyroidism. Now second condition क्या है? Second condition is कि if there is a high secretion, यहाँ पे हमने स्टडी किया लेस सिक्रेशन. सेकेंड पार्ट उसका होगा इफ देयर इज हाई सिक्रेशन. अगर हाई सिक्रेशन है तो क्या होगा? तो दैट विल डिस्कस हियर. अब लो सिक्रेशन है तो उसको हमने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म. हाई सिक्रेशन होगा तो वी कॉल्ड इट एज हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म. सो यहां पे लिखता हूं हायर secretion of thyroxine, right? And that condition we called it as hyperthyroidism. and उसे दूसरा नाम है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर. एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर. लेस सिक्रेशन है तो उसको हमने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म एंड उसे कहा सिंपल ग्वाइटर. यहां पर क्या कह रहे हैं? हायर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड दैट इज एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर. अब क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड कि कब हायर सिक्रेशन होगा. तो वहां पे टू थिंग है. फर्स्ट रीजन इज कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड. कौन से रीजन? हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा फर्स्ट ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड फर्स्ट. एंड सेकंड रीजन क्या होगा हायर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन करने का? ड्यू टू नोड्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. अगर ये दो चीजें होती है कौन सी? ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड ड्यू टू द नोड्यूल फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. क्या होता है? रेट ऑफ सिंथेसिस. उससे क्या होता है? इन दोनों से रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन increases to abnormal high level. Right? दो रीजन से क्या होता है? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन दैट इज द थायरोक्सिन इंक्रीजेस टू द एब्नॉर्मल हाई लेवल. बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ जाती है एंड उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म. दैट इज एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर. राइट? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर. अब एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जब होता है तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय once again the same reason. कौन सा सेम रीजन है? दैट इज enlargement of the thyroid gland. Right? Enlargement of thyroid gland. So hypothyroidism is characterized by first enlargement of
थायराइड ग्लैंड फर्स्ट, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। सेकेंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल्स थोड़े बाहर निकलते हैं, प्रोट्रूजन होता है, दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ eyeballs, protrusion of eyeballs, that is the third reason. Then हमारा जो basal metabolic rate होता है that increases, there is defect in basal metabolic rate. Third, weight loss, क्या होता है, weight loss, और ये पूरे कैरेक्टराइज अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसे पूरे कैरेक्टराइज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। कौन सा डिसीज? ग्रेव्स डिसीज। So hypothyroidism leads to the formation of the Graves' disease. The hypothyroidism is characterized by the enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, basal metabolic rate affect होता है, and weight loss. All together, the one disease, and that is the Graves' disease. उसे हम कहते हैं Graves' disease. So hypothyroidism is characterized by all these, right? So this is hypothyroidism and hyperthyroidism, दोनों में कॉमन है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बट सिंपल वाइटर दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ज्यादा होती है, मतलब 15 to 16 टाइम्स मोर, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म। सो दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब नाउ सेकंड की ये जो पूरी के पूरे हार्मोन्स है थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में क्या फंक्शन रेगुलेट करता है, तो इट रेगुलेट द फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में होते हैं। नंबर वन, दीज हार्मोन्स, यहाँ पे लिखूंगा, दीज हार्मोन्स रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। फर्स्ट क्या करता है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट थायरॉक्सिन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब कुछ बनना बॉडी के अंदर, कुछ टूटना, should be maintained. So regulate the basal metabolic rate, anabolism and catabolism, कार्बोहाइड्रेट का बनना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, regulate basal metabolic rate, that is the first. Second, these hormones regulate or these hormones promote or support, these hormones support RBC formation, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन को सपोर्ट करना, दैट इज द रोल ऑफ थायरॉक्सिन, राइट। सेकंड, इट कंट्रोल्स, क्या करता है, इट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, इट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, right? It controls the carbohydrate, protein, and fat metabolism. So this, right, regulate the basal metabolic rate, support RBC formation, control the carbohydrate, protein, and fat metabolism, and it also responsible for the maintenance of water and electrolyte balance. Water and electrolyte balance of our body. So these are the important functions performed by the thyroxine, hormones of the thyroid gland, right? So यहाँ पर वन हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, थायरॉक्सिन। और हमें पता है कि देयर इज अ सेकंड हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। सो सेकंड इज थायरोकैल्सिटोनिन, मैं यहां पे लिखूंगा थायरोकैल्सिटोनिन, उसे हम क्या कहते हैं, द सेकंड हार्मोन, उसे हम क्या कहते हैं, थायरो थायरोकैल्सिटोनिन,
to mean hypocalcemia. In short, it is TCT. Right? So TCT क्या करता है? पैराफोलिकुलर सेल बनाते हैं, right? And TCT क्या करता है? It regulate the blood calcium level. It regulate blood calcium level. हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करके रखता है। कैसे करते रहता होगा? तो एक सीधा है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम लेता है अगर कम ज्यादा होते हैं तो, सेकंड बोन से कैल्शियम लेता है अगर कम ज्यादा होते हैं तो। So this is what the TCT, and that TCT is protein hormone. कैसा है? It is a protein hormone produced by thyroid gland. And क्या काम करता है? It regulates the blood calcium level in our body. Blood में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करना। So this is all about the hypothyroidism and hyperthyroidism. In the next video, we'll discuss the another important gland, that is parathyroid gland.